dear student. I hope you all are doing good. Today we will starting our new chapter, but before starting a new chapter we will recite a dua. So repeat with me. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. Now we will starting our new chapter, that is the internet as a post office on page number 107. Basically, the internet is a worldwide network of millions of computers. It is a medium for communication, research and exchange of information. इंटरनेट प्रोवाइड करता है हमें सर्विस जिसके थ्रू हम मेल कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड मैनी मोर थिंग्स. Email is one of its most widely used feature. In this chapter, we will discuss how can we send our messages and pictures or anything you want through email. So firstly, we will open the Google. How can we open Google? Here we have a program Google. Now, the screen is up here. Google screen is up here. Here we have a option Gmail program. When you click over here, the screen shows up here. In this screen, here we have an option create an account. This is the option on create an account. Why we use this program? We use this option to create a new Gmail account. So with this option, you create a new Gmail account. You click over here. Now you can see एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो अपेयर हो गया. यू मस्ट हैव टू फिल दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेट अपेयर. फर्स्टली वी हैव अ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, देन यू एड पासवर्ड ऑन इट एंड देन यू क्लिक द नेक्स्ट बटन. In this way you can create your Gmail account. Now how can we use this Gmail account? After filling your registration form, the welcome screen appears next, as shown in figure 7.7 on page number 112. Click the continue to Gmail to get the screen shown in figure 7.8 in the same page 112, showing that the inbox of your newly created Gmail account. The inbox shows 3 mail from the Gmail team. आपको 3 mails आएंगे Gmail team की तरफ से. You can click to open the mails and check their content. Now we will discuss how can we composing and sending an email. So here we have an option of composed. When you click on this option, the screen is appear. In this option we have 3 another option like from, to, subject and compose mail. We will discuss one by one all these options. Now we have type the email address in the recipient in the to box. This is the to box. In this box you can write your email address जिसको भी आपने अपना मैसेज सेंड करना है. Now when you click in this option, so here we have 2 more options like CC and BCC. The function of CC is allow you to send the same message to 2 or more people at one go, and CC stand for carbon copy. Same as we have another option like BCC. BC stand for blind carbon copy. ये allow करती है to send the same message to several people without letting them know that other have also received the same mail. So this is the 2 types through we can send our messages. Here we have another option which is subject. Basically, subject is a little description of message we can write here. टाइप अ शॉर्ट मैसेज. किसी भी मैसेज की जितने भी डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो एज अ सब्जेक्ट. नाउ वेयर वी टाइप आवर मैसेज, बेसिकली टाइप द मैसेज इन द सेम एरिया. क्लिक द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. दिस इज द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एरिया. यू कैन टाइप एनी मैसेजेस here. Now we will discussing another option
Here we have another option, that is attach file to a messages. This is the option of attach file. आप यहाँ से अपनी कोई भी फाइल को अटैच कर सकते हो मैसेजेस के साथ. सो आप जैसे इसे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे कि आपको वो फाइल कहाँ से रिसीव करनी है, कहाँ से लेनी है. तो आप वहाँ से अपनी फ़ाइल लोगे और यहाँ पर अटैच कर सकते हो. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम फीचर ऑफ ईमेल. बेसिकली ईमेल के भी सम फीचर्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी हैव द फीचर ऑफ इनबॉक्स. इनबॉक्स यूज़ किया जाता है टू स्टोर द इनकमिंग मैसेजेस, showing all unread messages as highlighted also. Now another option which is draft. This is the draft option. It stores messages that you started to write but have not yet sent. We have another option, that is sent mail. इन दिस ऑप्शन ये स्टोर करता है मैसेजेस को डेट यू हैव सेंट. नाउ वी हैव एन ऑप्शन दैट इज ट्रैश. इट स्टोर डिलीटेड मैसेजेस. वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज कॉन्टैक्ट. That is contact. It stores email addresses of your friend and other email contacts. So here we stop our chapter. We will continue our video with our next new topic. Thank you.